हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम अपने स्विफ्ट के टायर चेंज करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे अभी करंट कंडीशन क्या है अपने टायर्स की। यू कैन सी ये टायर 2015 के जब हमने ये गाड़ी खरीदी थी और इसकी कंडीशन देखोगे तो बहुत ख़राब हो चुके हैं और आई थिंक इट इज़ अ मच नीडेड रिक्वायरमेंट टू चेंज द टायर्स। सेम कंडीशन चारों टायर की है, आप देख सकते हो। ये पीछे वाले टायर हैं। सेम गोज विद दिस। ये भी 2015 की, ये गाड़ी 2015 की है, तब से ये टायर्स चेंज नहीं हुए हैं। सॉरी गाइस, बाहर बहुत आवाज़ थी पर दिखाना इम्पोर्टेंट था। अब अगर आप इफ़ यू कैन सी माई टैकोमीटर, इट शोज 45,691 किलोमीटर और ये गाड़ी 10 साल पुरानी हो चुकी है और ये 45 ऑलमोस्ट 46,000 चल चुकी है एंड इट डजंट हैव अ सिंगल पंक्चर। बट हम इस बार 100% टायर चेंज करेंगे और उसके साथ उसके स्टील रिम्स भी चेंज करेंगे। लास्ट टाइम सर्विसिंग के दौरान मुझे सर्विस इंजीनियर ने कहा कि आपके व्हील्स थोड़े से डैमेज है, बेटर यू चेंज इट। सो वाई टू टेक रिस्क, विल चेंज इट। आई विल टेल यू द स्टोरी बिहाइंड इट, हाउ आई अरेंज्ड माई व्हील्स steel rims. I didn't bought it original or Maruti genuine or from Maruti showroom, but I arranged it from somewhere else. I will tell you the whole story later. तो चलो फिर चलते हैं अपने टायर शॉप की तरफ। हम हैं बैंगलोर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। गाइस, प्लीज वेयर योर सीट बेल्ट्स व्हाइल ड्राइविंग। ओके, ये हमने कर दी अपनी गाड़ी स्टार्ट, गियर डाल दिया और निकले हम अपने शॉप की तरफ। गाइस, इफ यू कैन सी मेरी स्पीड है अभी अराउंड करीब 50 to 60 के बीच में और इफ यू आर एबल टू हियर द रोड नॉइज, लेट्स चेक व्हाट वुड बी द डिफरेंस आफ्टर चेंजिंग द टायर्स। ओके, अभी ये पुराने टायर है, 10 साल पुराने टायर्स है और गाड़ी भी पुरानी है, but the main role which plays is the tires. So let's see what would be the difference after changing the tires. This is just for an example of old tires and what would be the difference after changing to new tires. So let's see, हम जिस जगह जा रहे हैं वो एक कॉन्टिनेंटल के डीलर्स है, but he'll keep all type of tires. Let's see what he suggests. मेरा एक्चुअली बजट इज नॉट फॉर प्रीमियम टायर्स, बट विल ट्राई टू कीप इन बिटवीन, नॉट चीप नॉट प्रीमियम वन, इन मिडल। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। गाइस, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, दैट इज कॉन्टिनेंटल टायर्स। इज इट विजिबल टू यू? लेट्स सी।
भैया कितना प्रेशर 36 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂದೇ ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಟೈರು ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಹಾಕಿರೋದು car will go for wheel alignment. Guys, at last we have bought new tires for our Swift. So let's check how's the performance of this new tires. I feel confident about this new tires. It feels confident. Braking, comfort has increased. Let's see how is on roads. Remember, we have already taken a test drive with our old tires, and let's see how it is. There any difference or it's similar? I personally feel that there is some difference and it has improved a lot. These are our new tires. How does this look? These are our new shoes to our new shoes to our Swift. So finally we have changed the tires after a lot of efforts.